of the proceeding is telecast live. How can the presiding officer expand on orders operate? सर इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए सर. हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा वो गरिमा बरकरार रही है सर. आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं. हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं. सर जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते. जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते. लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते. लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं. पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे. क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, 0 आवर उठाने का मौका नहीं है. फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र की गरिमा को बजाय रखना चाहिए. सर ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते. ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. सर देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड. ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड. अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस. हम नया सदन में जाएंगे लेकिन पुराने को याद में रखेंगे. सर फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोसाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं. हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे. इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं. ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा. अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है. श्रीमान TR बालू साहब. Sir, from 1962 onwards, the DMK, now presided by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin, has been part of all historical discussion in this House and also in the other House. Sir, though called this is the special session, there is nothing special about it. Just yet another session. The new Parliament building has been constructed at an enormous cost without a felt need. Money has been carved out by government when there is so much of financial crunch. Now Parliament House inaugurated with much fun and fair. But why the last session was not held? Was it due to any vastu consideration or any only today you could find the auspicious moment? More than auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business, which augurs well for the well-being of peace, progress and happiness of 143 crore people. This session in new premises seems not to be a social session but an emergency session, or to carry out certain urgent mission of the ruling party to fulfill certain ulterior objects only in violation of democratic norms. This sitting will take stock of India's journey as an independent nation. We got independence in 1947. The 75th year of celebration fell last year in 2022. We have already stepped into 76th year. If at all any special event has to take place of the long journey, it has been done, it should have been done last year itself. Okay, even accepting the while that we are commending our 75th year parliament, such a special sitting should have been done in the historic parliament, house where the country's destiny was decided further
further nurtured and renewed in 1947. India, our country, our dear nation, the largest and vibrant democracy in the world, is today because of the invaluable contributions of firstly of the people of the country. Then comes to the political parties and the leaders who steered government for the majority of the time. That is, for the past 6 years, government of India was run by parties other than the present party. The strong base of the modern India, the developed India, was laid by 6 decades of planned work done by sovereign leaders, starting from Jawaharlal Nehruji, the light of Asia. Contributions of Prime Ministers Lal Bahadur Shastriji, Indira Gandhi ji, Morarji Desai ji, Chaudhary Charan Singh ji, young Prime Minister leader Rajiv Gandhi ji, and Narasimha Rao are great indeed. Tower of strength of the backward class masses, who constitute more than 60%. VP Singh ensured social justice to them, which was denied to those marginalized fourth-level people, so-called Sutras. His contribution is immense and invaluable. It will stand out and shine in our modern history of progress. His government was pulled down with vengeance by forces inimical to empowerment of weaker section. Leaders and their parties who led the country with a lot of sagacity and foresightedness. Whenever there was political instability, when single-party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting standard person. It happened in 1989, 96, 98, 99, 2004, and 2014. The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Deva Gowda, I.K. Gujaral, Atal Bihari Vajpayee, and Dr. Manmohan Singh. The political leaders who played a great role then were DMK leader Dr. Karunanidhi, NTR, George Fernandez, Communist Party like Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Sujit Singh. When we look back at 75 years, the contribution of these tall leaders is great and needs special mention. The contribution of opposition parties, mostly of the regional parties like DMK, in national politics and governance, have a special place. This constructive opposition criticism and suggestions have helped the government from time to time take corrective measures because they have represented the regional interest and linguistically minority population groups. DMK in parliament since 1962. Our founder leader Anna, who was in high esteem by his contemporary leader Nehruji, Vajpayee and others, spoke for the political rights of states, protection and development of various classical languages like Tamil, though he advocated a separate Dravida Nadu in 1962. When a Chinese force was on us, he felt that territorial integrity of India was paramount importance. Though Anna gave up the Dravida Nadu, he claimed loud the reason for a separate nation still existed. That way, it was sagacious advice of central government. After all, India is a union of states. That is the constitutional position. 560 princely states and kingdoms, including large countries like Kashmir, Hyderabad, small kingdom like Pudukkottai and Tamil Nadu, joined later with independent India. Sikkim was the last to join in Indian part. In the last 75 years, promises given to its members, state and just aspiration of the people of the states, with various cultural traditions have been broken by Union of India. The latest example is repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir, like rubbing salt on the serious wound that large states have now been broken into 2 union territories, whereby the emotions and rights of the people of Kashmir have been trampled upon. While looking back India's 75 years, patting our backs and claiming credit to the impressive performance like Chandrayaan by individual leaders and parties is not appropriate. The success we have seen so far is success of 140 crores of people of this country. Without और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं. मतलब आप अंदाजा लगाइए, if leader of the opposition would rise on this critical occasion
to sanctify disturbance, disruption. आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। So why are you commentating on his speech? Jairam ji, this is not a good habit. No, you are a victim of this habit. Don't have this habit. Don't have this habit. No, this is not a. When the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Sir, Every time, I have no desire to sit there. even if you have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting him, sir. please, take your seat. So, Manya Khadge ji, this is a rare historic occasion where, after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25-50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you are focused on two things, sir. I find it. You and him, sir. Sir, this is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. The problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sir, this is wrong. This is wrong from your part, sir. This is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Misleading, sir. Don't do that. You are misleading the house. Misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very partisan attack. Remark from you, sir. Sit down. Sir, please I explain your have own said, statement. one second. I request you to One explain second. your own Jairam, statement. take it. Sir, please explain your own statement. Take it. No. You are not debating here, Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. Digvijay ji. एक please. अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. Digvijay ji, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must discipline our conduct by decorum discipline. One second. Sir, please don't cast aspersions on all. One second. Sir, Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater sir, a मैं most तो खत्म important करता हूँ. message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. Sir, thank you, sir. क्या टॉलरेंस है अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर सभापति जी मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे.
तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूं थोड़े से। सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा, वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है। वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। आप देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड। हाँ, आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत हेजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत हेजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था तो माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर
जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना। मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया। अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया। लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का। एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है our attainment in 6 years is something which can't be attained in 50 years.